Hello guys, welcome back to BN by IAS. In this Mission Mains series, we have been trying to understand how to approach answer writing to mains questions. So this we have been doing through previous year questions, right? So previously we have seen answer writing to GS paper 1, particularly geography section में जो circum Pacific zone जो है उससे related एक question देखा है हमने. So the video is available. If you have not watched it, please go and check it out. Now in this particular video, we will be focusing on GS paper 2. See, we will touch all the GS papers 1, 2, 3 and 4 as well. 4 के लिए I'll make separate video कि how to approach the answers in ethics paper, particularly case studies वगैरह quotation based questions को कैसे approach करना है. So now let us focus on today's topic, that is आज का क्वेश्चन है 2021 मेंस में जीएस पेपर 2 में जो पूछा गया है. द क्वेश्चन इज फॉर 10 मार्क्स एंड 150 वर्ड्स में लिखना है. द क्वेश्चन इज हाउ हैव द रिकमेंडेशंस ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया enabled the states to improve their fiscal position. देखो यहाँ पर हमारा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो है, से recommendations of particularly 14th finance commission which has helped in consolidating or in improving the fiscal position of the states. That is the core of this question. That is the core demand. अब इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर में कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर देखो. ऑफ कोर्स दिस स्ट्रक्चर इज फॉर आवर पर्पस, लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए है ये वाला स्ट्रक्चर जो है. so you don't have to write this in the examination. एक्चुअल एग्जामिनेशन में स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली आंसर पे चला जाएंगे. गॉट इट. सो दिस इज फॉर आवर ओन, लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग बोल सकते हो, या इन ऑर्डर टू पुट योर पॉइंट्स इन ए फ्लो, एक कोहेरेंट मैनर में रखने के लिए यू कैन प्रैक्टिस ऑन दिस इनिशियली, ठीक है, बट ये एग्जाम में नहीं लिखना है. नाउ इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, ऑब्वियस है फाइनेंस कमीशन के बारे में लिखेंगे और थोड़ा सा स्पेसिफिकली 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में बता देंगे. देन बॉडी पे recommendations जो है, that to those recommendations which have improved the fiscal position or financial position of the states, उस पे फोकस करेंगे. देन कंक्लूजन भी ऑप्टिमिस्टिक तरीके से करना होगा. दिस आई हैव टोल्ड यू इन दी अप्रोच टू मेंस आंसर्स. तो यहाँ पर we will highlight the role of finance commission and the role played by it in ensuring federalism in financial sphere, that is financial or fiscal federalism. ठीक है, इसको हाईलाइट करते हुए we can conclude the answer. So this is how we are going to approach it. So let us begin with the answer, that to the introduction. देखो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये सब हेडिंग्स रखने की जरूरत नहीं है इन योर आंसर. यू कैन डायरेक्टली राइट इट एंड इट इज अंडरस्टूड. द फर्स्ट पैरा इज इंट्रोडक्शन, इट इज अंडरस्टूड. सिमिलरली नेक्स्ट कम्स द बॉडी, इट इज आल्सो अंडरस्टूड. एंड फाइनली जो कंक्लूडिंग पैरा होता है, इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज कंक्लूजन. यू डोंट हैव टू पुट एनी सब हेडिंग देयर, ठीक है, डोंट यूज दीज सब हेडिंग्स. नाउ आंसर का बिगिनिंग देख लीजिए. फर्स्ट वी विल राइट अबाउट फाइनेंस कमीशन. Finance Commission is constituted by the President under Article 280 of Constitution, mainly to give its recommendations on the distribution of tax revenues between the Union and states and amongst the states themselves. So यहाँ पर जो जो points highlight है उनको underline करेंगे examination में. जैसे यहाँ पर constituted by the President, under what, under आर्टिकल 280. फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज. ठीक है, इन 3 पॉइंट को यहां पर अंडरलाइन करें. ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू दी सेकेंड. सी थोड़ा सा स्पेसिफिकली 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में बताना होगा. तो दैट इज व्हाट वी आर राइटिंग हियर. 14th फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2013 to make recommendations for the period 2015 to 2020. सी 2020 के बाद जो पीरियड पे है वहां पर 15th फाइनेंस कमीशन आ गया है, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एन.के. सिंह. बट दिस क्वेश्चन इज पर्टिकुलरली asking about 14th. That's the reason why we are giving this detail related to 14th Finance Commission. Obviously, we will be mentioning the chairperson of the 14th Finance Commission, that is Dr. Y.V. Reddy. Simple. ठीक है. So this is your introduction and linking with your body. This is the linkage. ठीक है.
नाउ बॉडी में क्या फोकस करेंगे? वी विल फोकस ऑन द recommendations. See, the 14th Finance Commission enabled the states to improve their fiscal position in the following ways. Let us look at those recommendations. सबसे फर्स्ट है शेयर इन दी सेंटर्स डिविजिबल पोल. मतलब ये जो टैक्स रेवेन्यू होता है इसको हाउ टू लाइक डिवॉल्व बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स इज recommended by the finance commission. प्लीज रिमेंबर दैट इज ओनली रिकमेंडेटरी रोल. वहां पर अप्रूव करता है नहीं करता है दैट इज सेंटर्स. लेट्स फोकस ऑन दी नो कॉन्टेक्स्ट हियर. इसने क्या किया था? इट हैज इंक्रीज्ड दिस डिविजिबल पोल फ्रॉम 32% टू 42%. अभी 15th फाइनेंस कमीशन का भी आप चाहे तो रिवाइज कर सकते हो, वो 41 कर दिया है. 1% पर्टिकुलरली जो नया बनाया हुआ जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए सेपरेटली इंश्योर कर रखा था. Now, how it has helped the states in improving the fiscal position? See, this particular recommendation, which is accepted by the center, it has enhanced the state's autonomy, मतलब इंडिपेंडेंसी, और यू कैन से उनका डिस्क्रिशनरी पावर विथ रेस्पेक्ट टू डिसाइडिंग द एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज. से अगर ये टैक्स रेवेन्यू से शेयर नहीं करता, then center could have kept some like obligations on the states to spend the money in a particular manner. लेकिन जो टैक्स रेवेन्यू से डिविजिबल पूल से मिलता है वहां पर स्टेट्स को ऑटोनॉमी होता है टू प्रायोरिटाइज देयर एक्सपेंडिचर. मतलब कहां पर कितना खर्च करना है वो अपनी मर्जी से अपना लोकल नीड्स के हिसाब से कर सकते हैं. So obviously that is independence to spend the money on particular areas. So this is one. Second, centrally sponsored schemes. See, यहाँ पर कमीशन रेकमेंड किया है कि 8 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है दे मस्ट बी डी-लिंक्ड फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ द सेंटर. सी, सेंट्रल आपके पास दो स्कीम्स मिलते हैं जनरली. सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जहां पर पूरा फंडिंग सेंटर से आता है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वेयर द फंडिंग इज एक्चुअली शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स. बट यहां पर कह रहा है कि 8 सच सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को डीलिंक करो फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ द सेंटर. जैसे ये डीलिंक कर रहा है, सो दैट मीन्स you will have more autonomy, more independence in spending and prioritizing how much to spend in those schemes. वो भी एक साइड से आपके लिए इंडिपेंडेंसी है. देन थर्ड देखो, टैक्सेशन बी द प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रांसफर. सी, सेंटर ट्रांसफर्स मनी थ्रू वेरियस मीन्स. जहां पर ग्रांट्स वगैरह होता है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द फिजिकल फेडरलिज्म. कोई कोई स्टेट को ज्यादा मिल जाता है, कोई स्टेट को कम मिल जाता है, वो भी अपना डिस्क्रिशन के हिसाब से सेंटर का. नाउ कमीशन ने क्या रेकमेंड किया था? मेनली आपका प्राइमरी ट्रांसफर जो होना चाहिए दैट शुड बी फ्रॉम द टैक्सेशन, दैट इज फ्रॉम द डिविजिबल पोल. डोंट गो फॉर लाइक डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स एंड अदर अनकंडीशनल ग्रांट्स. ठीक है, यहां पर सी विदाउट एनी कंडीशंस आते हैं इफ दे आर कमिंग फ्रॉम द डिविजिबल पोल. ठीक है, सो दैट विल गिव द स्टेट्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर स्पेंडिंग. जैसे यहां पर देखो, दे आर गेटिंग मोर ऑटोनॉमी इन नो prioritizing their expenditure. So that is what they will get it if it is mainly coming from like unconditional transfer from the center. So that has been recommended by the commission. Next, एक और बात देखो, grants. Particularly these grants were like proposed to include grants for the rural and urban local bodies. मतलब it is also in line with the fiscal federalism. Federalism में क्या है? You will be accepting this multiple levels of government and the cooperation and coordination among them, right? So यहाँ पर even local governance, rural and urban local bodies जो है उनको भी grants transfer करने के लिए कहा है, and that is performance based. Particularly यहाँ पर almost 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा, 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर चुका है for various purposes such as disaster relief, revenue deficit, etc. So this has also provided extra income or extra money for the states to improve upon their fiscal position. Next, finally, compensation, GST compensation.
से जीएसटी कॉम्पेंसेशन के लिए ये रेकमेंड किया था फाइनेंस कमीशन ने। सी दो स्टेट्स विच आर इन दी लॉस, ठीक है। तो जहां पर क्या करना था, द सेंटर हैज टू कॉन्स्टिट्यूट ए जीएसटी कॉम्पेंसेशन फंड बाय लेविंग ए सेस फॉर द सेम पर्पस, एंड यहां से जो पैसे होता है इसको स्टेट्स को ट्रांसफर करना होगा जितना लॉस है उसको फुलफिल करने के लिए। यहां पर भी फर्स्ट इनिशियली एक्चुअली ये फर्स्ट 5 इयर्स के लिए सेटअप कर रखा था। इनिशियली 3 इयर्स के लिए 100% लॉस जो भी है वो पूरा ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट 1 ईयर के लिए 75%, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए 50%। दिस वॉज दी नो रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। सी अभी रिसेंटली ये न्यूज में भी था 2026 इसको मतलब नेक्स्ट 4 इयर्स तक इसको एक्सटेंड कर लिया। 2017 में बनाया, 2022 तक था 5 साल के लिए, बट कोविड एंड ऑल अदर थिंग्स की वजह से फिर एक्सटेंड कर दिया है। नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 2026। प्लीज अपडेट दिस इंफॉर्मेशन। See, through all these measures, states are getting transfers. Some of them are unconditional transfers where the role of the state in prioritizing their expenditure according to their needs is more. So that enables the states to improve their fiscal position. Now, these are all the points. You can conclude by highlighting these points. Now, conclusion में क्या कर सकते हैं? See, the 14th Finance Commission recommendations improved the state's finances, which will assume greater significance for macroeconomic management and stability. जैसे कुछ states में fiscal deficit बहुत ज्यादा हो गया, वहां पर they can reduce it. So with these recommendations, the states got the autonomy in deciding their expenditure priority, which is also in line with fiscal federalism. बस that's it. इस तरीके से हम conclude कर सकते हैं. That's it guys. I hope this question is clear and approach is clear. अगर any particular question को if you want me to give the approach or model answer, please put it in the comment section. I'll definitely do it. Thank you very much guys. If this video is useful, please give a like, share it among your fellow aspirants and subscribe to the channel. See you in the next video with another question. Probably I'll focus on GS paper 3 क्योंकि 1 डिस्कस किया था एक सेक्शन, 2 डिस्कस किया है, 3 डिस्कस करते हैं, देन 4 के लिए कुछ जनरल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो ऑन in this circular manner like one question from each of these GS papers. That's it guys. Thank you very much for tuning in. See you tomorrow with another question. Bye bye. Take care.